Hello everybody, it's Akshansh here, and since the weekend is here, there is no trading and it's the perfect time to learn something new. And आज की वीडियो में what I'll be discussing with you is moving averages. All right, so let's get started with moving averages. But before we get to moving averages, let's try to remember what averages are. I'm sure आपने पढ़ा होगा स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर कि एवरेज क्या होता है. It's just simply आपके पास जितने भी नंबर है आप उन सबका सम कीजिए और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड नंबर्स जो है वो है 100 200 300 400 500 राइट. तो मैं इन पांचों नंबर का सम करूंगा विच टर्न्स आउट टू बी 1500 और उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा. 5 इसलिए क्योंकि 5 इज द टोटल नंबर्स राइट. तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 इज 300. तो ये एवरेज होता है. इट्स वेरी सिंपल. नाउ इफ आई एड अनदर नंबर विच इज माय सिक्स्थ नंबर एंड दैट इज 600, तो अब मेरे पास टोटल नंबर्स ऐड करने के बाद जो टोटल बनता है दैट इज 2100. And if I divide it by 6 now, I get 350. So average is just that simple. Now simple moving average. What is a moving average or a simple moving average? It's again very straightforward. Only that इसमें आप 5 ही नंबर अपने पास मेंटेन करके रखेंगे या डिपेंडिंग ऑन आप 50 रखना चाहते हैं तो आप 50 नंबर्स लीजिए. बट फॉर दिस एग्जांपल आई विल यूज ओनली 5 नंबर्स. सो जब आप 6th नंबर ऐड करते हैं then you get rid of the first number. आप पहले नंबर को छोड़ देते हैं and you replace it by the 6th number, right? तो आपकी एवरेज जो है वो 1 to 5 थी, अब 2 to 6 हो चुकी है. so it's moving, right? जैसे ही 7th नंबर आएगा your average would move to 3 to 7, 8 आएगा तो 4 to 8, so on, right? तो आपकी एवरेज जो है it will move, it will not consider the oldest number. जो भी आपके लिस्ट में oldest सबसे पुराना नंबर होगा उस नंबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द लेटेस्ट नंबर. दैट इज व्हाट मूविंग एवरेज इज. एंड मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज हाउ यू टेक इट आउट. तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, आप 5 नंबर जो आपके लेटेस्ट 5 हैं आप उनको लोगे, जैसे 200 300 400 500 600, उनका आप सम निकालेंगे विच इज 2000 एंड उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो योर सिंपल मूविंग एवरेज वुड बी 400, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज. बट सिंपल मूविंग एवरेज को अगर हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं तो देर इज वन पोटेंशियल प्रॉब्लम विच इज दैट हमने पांचों नंबर का सम करके निकाल दिया, राइट. एंड इस एवरेज के अंदर 200 इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू 600, जबकि 600 लेटेस्ट पॉइंट था, वो करंट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, राइट. तो हम 600 को 200 से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. बट सिंपल मूविंग एवरेज में दिस इज नॉट द केस. इस केस में 200 300 400 500 600 सब एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ ऐड हो रहे हैं एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. इसीलिए देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड EMA which is exponential moving average, right? So simple moving average को हम replace कर सकते हैं with another indicator called exponential moving average, जिसके अंदर the only difference is that 200 is given less importance than 600, or in other words we can say that 200 is given less weightage than 600. तो जो लेटेस्ट पॉइंट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनको ज्यादा वेट दिया जाता है एंड पुराने पॉइंट्स को कम वेट दिया जाता है. सो दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज. नाउ इन थ्योरी इट सीम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है EMA में देन यू कैन रिवाइंड एंड लुक एट दिस वीडियो अगेन. आई विल नॉट गो थ्रू द एग्जैक्ट वेटेज क्या होती है एंड हाउ दैट इज बिकॉज दैट कैन वेरी. आप कितने दिन का कर रहे हैं, आप कितने पॉइंट्स का कर रहे हैं, उसके हिसाब से वेटेज भी वेरी कर सकती है. एंड द फॉर्मूला इन इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट. वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सिंपल मूविंग एवरेज है जिसमें लेटेस्ट पॉइंट्स को पुराने पॉइंट्स से ज्यादा वेटेज दिया जाता है एंड दैट इज व्हाई इट इज गुड फॉर इंट्राडे, क्योंकि लेटेस्ट प्राइस चेंजेस के हिसाब से EMA अपने आप को ऊपर या नीचे करता है, राइट. So now, without further ado, we will get into our Zerodha account and have a look at our Britannia stock. Britannia की जगह आप कोई भी stock को use कर सकते हैं. We can use any stock.
Let's use Britannia for this video. If you have any other stock that you want to look at, please mention it in the comment section below, and I can make another video of using the EMAs with another stock, right? So let's look how we can study EMA and how we can create simple moving averages here. So first, what we will do is we will type moving average here in Zerodha studies column. Moving average को I will select and it will give me an option to choose the type of the moving average. Okay, ये मेरे को moving average का type क्या है वो choose करने को देगा. पहले मैं simple ही try करता हूँ. I will just use simple moving average for 50-day period. अभी 50 period को use करते हैं and click on the done button, right? तो अब you can see that simple moving average कैसे काम करता है. प्राइस नीचे गया तो सिंपल मूविंग एवरेज नीचे आया, प्राइस ऊपर गया तो सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर आया, एंड सो ऑन, राइट. तो हमें पता है सिंपल मूविंग एवरेज का काम कैसे करता है. जो लेटेस्ट पॉइंट आता है ये पुराने पॉइंट को रिप्लेस कर देता है लेटेस्ट पॉइंट से. बट इसमें एक जो हमने जो डाउन साइड देखी थी वो ये थी कि ओल्डेस्ट पॉइंट इसमें जो करंट ओल्डेस्ट पॉइंट है और करंट लेटेस्ट पॉइंट है उनकी इंपॉर्टेंस काइंड ऑफ इक्वल है. तो हमें इमीडिएट मार्केट ट्रेंड की तरफ बहुत तेज झुकाव नहीं दिखता. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया बट सिंपल मूविंग एवरेज ने बहुत ही अपना टाइम लिया, आराम से ऊपर आया, राइट. सो ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है एंड इसको दूर करने के लिए वी कैन यूज अनदर काइंड ऑफ मूविंग एवरेज. इसके अंदर वी विल ऐड अनदर मूविंग एवरेज और इसका टाइप वी विल चेंज टू exponential. There are a lot of different types of moving averages, but we will for now suffice with exponential moving average. तो exponential moving average को मैं use करूंगा same 50-day period and इसका color में blue कर दूंगा, right? And I will click on the done button again. And अब आप देखेंगे कि जब प्राइस ऊपर गया तो EMA which is exponential moving average SMA से faster ऊपर गया. जब प्राइस नीचे गया तो EMA फिर फास्ट नीचे गया. तो अगर ऊपर जाएगा तो ईएमए पहले ऊपर जाएगा एसएमए से, अगर नीचे जाएगा तो ईएमए पहले नीचे जाएगा, राइट. इट इज मोर रिएक्टिव. तो इंट्राडे के लिए ये ज्यादा सूटेबल है कंसिडरिंग टू एसएमए. तो आप ईएमए को यूज कर सकते हैं. वी विल डिस्कस कि ईएमए 50 पीरियड पे यूज होना चाहिए, 20 पर, 30 पर, हाउ वी कैन यूज दैट. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई विल जस्ट यूज अ 50 पीरियड ईएमए. Okay, so now we will see how we can use EMA to find potential entries and how to exit out of a trade with EMA. Okay, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप आपका पोटेंशियल एंट्री तब होगा जब EMA की लाइन को प्राइस क्रॉस करेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सिंपली EMA को क्रॉस किया. सो आई विल ड्रॉ इट आउट फॉर यू एंड यहाँ पर वी कैन सी कि EMA की लाइन को प्राइस ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया. सो दिस इज योर बाय सिग्नल. जब EMA नीचे से क्रॉस होता है, प्राइस नीचे से आकर EMA को क्रॉस करता है, दैट इज व्हेन यू शुड लुक टू बाय. आई एम नॉट सेइंग यू शुड ऑलवेज बाय, यू हैव टू बी मोर केयरफुल. देयर आर अदर थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस EMA फॉर नाउ. एंड ये आपका पोटेंशियल बाय सिग्नल है एंड आपने यहाँ पर बाय किया एंड देन यू होल्ड. एंड यहाँ पर व्हेन EMA इज शोइंग नेगेटिव trend, when price is falling down or EMA को touch कर रहा है, this is when you can look to sell, right? And this is sort of a no trade zone. Okay, जब EMA पर ही trade हो रहा है, this is again a sell signal and this is again a buy signal. तो यहाँ पर भी there is not a huge profit. आप यहाँ पर भी exit कर सकते हैं, but again every indicator is not 100% perfect. So another thing about EMA is कि जब EMA से प्राइस ऊपर जाता है देन EMA कैन एक्ट एज अ सपोर्ट. जब भी प्राइस EMA को क्रॉस करके ऊपर जाएगा देन EMA कैन एक्ट एज अ सपोर्ट. एंड जब भी प्राइस नीचे जाएगा देन EMA कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस ने EMA को क्रॉस किया इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच मींस EMA इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. एंड यहाँ पर EMA की लाइन को प्राइस ने ऊपर की तरफ को क्रॉस किया. So now our EMA is acting as a support. Okay, so this is what the most simple use case of EMA is. ये सबसे सिंपल तरीका है EMA को यूज करने का. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल पोटेंशियल इश्यूज आर कि आप इस जोन में बहुत सारे आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट. आप बहुत सारे सिग्नल्स इसमें लेकर मिस्टेक कर सकते हैं. यू कैन बुक लॉसेज ऑल्सो. तो इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर दैट वी कैन यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड
EMA crossover, exponential moving average crossover. और उस कॉन्सेप्ट के बारे में आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में वी विल जस्ट फोकस ऑन EMA and we covered 2 points. One is that when a price goes below the EMA line, that is when you can look to sell. And the second is when the price goes above the EMA line, for example, here, that is when you can look to buy. Okay. But EMA is not a perfect indicator in itself. इसके साथ आप different चीजें और use करेंगे. That is what I will discuss in my next video. If you have any comments, please leave a comment. If you have any doubts, let me know. Like and subscribe if possible. Thank you so much.